Live from New Delhi, you're watching DD India News Hour, India's voice to the world. I'm Abhishek Mahajan. Coming up in the next hour. West Asia remains on boil. Explosions reported in Dubai as Israel signals continued operations. Iran's new supreme leader, Mojtaba vows to keep Strait of Hormuz shut. Regional tensions in West Asia simmer as leaders vow to continue fight. Donald Trump signals continued US action against Iran. Prime Minister Modi in India's northeastern state of Assam today to lay foundation stone for projects strengthening road and energy infrastructure. Afghanistan strikes back after 4 killed in Kabul and other provinces in attack by Pakistan. In the latest development in West Asia conflict, fresh strikes were reported in Iran and several Gulf countries. A building in central Dubai was hit by debris from an intercepted attack on Friday. The debris caused minor damage to the facade of the building. Explosions rattled buildings and a large cloud of smoke hung over a central area of the city. Amid heavy exchanges of drone and missile strikes across the region, powerful explosions rattled Tehran on Friday morning. All right, let's go across to Parliament. Union Finance Minister is going to reply on the discussion on the supplementary demand, on which I have already given earlier. But certainly a few members have spoken on specific issues related to the supplementary demand for grants. So initially, I will speak a few words about what exactly is in the supplementary demand for grants and then respond to each one of the members who have raised the issues. So the second supplementary demand for grants, first of all, let me explain that within a year, up to 3 supplementary demands for grants have been placed on the table of this House for decades. But I'd like to say, under Prime Minister Modi's guidance, we have brought it down to the bare minimum, 1 or 2 and not beyond 2. So because not beyond 2 is a self-imposed kind of a restriction, so that we don't have a habit of bringing in more and more amendments and seeking Parliament's approval, we have made sure that we will minimize it to 2. But not doing even 2 or 1 would mean that we are inflexible, and would also mean that where states are asking for some, or when departments are asking for something which is so essential for them to function, it will look very uncaring and irresponsive of the government. And therefore, I think supplementary budget, which as per the original constitution makers, supplementary demand for grants is a very useful instrument. And where it is necessary, we will have to use it. But bringing that supplementary demand for grants should not be looked at as if some wrong assessments have been made originally in the budgetary estimate time, and therefore we have brought this. So it is done with a lot more open-mindedness and also flexibility which can be offered to the departments. And in that order, this time, we have placed the second supplementary demand for grants. Sir, in this, I seek the approval of the Parliament for expenditure requirements related to 61 grants. This involves gross expenditure of about 2.81 lakh crore through cash or technical or token supplementaries. The present proposal also includes
an amount of 902 crore rupees that is being provided for recouping advances of an equivalent amount from the contingency fund of India. So 2.01 lakh crore is the cash supplementary which is being taken under 18 grants, while 0.80 lakh crore is the technical supplementary, and that's being sought for 32 grants, and 59 total supplementary items are being sought from 43 grants. Upfront, I like to say that this 18 plus 32 plus 43 may not add up to 61, which I originally said 61 grants are being placed here, is because some of them repeat or overlap, so the numbers may not add up. With respect, I would want members to be taking this fact into cognizance. Now, first of all here, I also would want to give that point as a reiteration. I wish to reiterate that with all this extra that we are coming up with, technical supplementary, cash supplementary, I do not want any member of the parliament to wonder if I will be able to reach the fiscal deficit number that I have said during placing the budget here. The budget for 26-27 certainly states what's the budget fiscal deficit for the year ending March 31st, 2026 is going to be, and the rest is going to be for the rest. So we are not going to in any way not fulfill the word given in the budget. So I wish to reiterate that the commitment which has been given in this House for the second supplementary, inclusive of the second supplementary demand for grants, will be within the fiscal deficit presented, the target that has been presented in this Parliament on 1st February 2026. Sir, it's important for us to also recognize that we have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. And this I would want to elaborate a bit because 57,300. All right, so this was Finance Minister Nirmala Sitharaman speaking in Lok Sabha, replying on the discussion on the supplementary demand for grants 2025-26. Moving on, US President Donald Trump said on Friday the United States was totally destroying Iran and claimed Iranian military forces and leadership were being decimated. In a post on social media, Trump also signaled more action ahead. Trump wrote, and I quote him here, "Iran's navy is gone. Their air force is no longer missiles, drones and everything else are being decimated, and their leaders have been wiped from the face of the earth. They have been killing innocent people all over the world for 47 years, and now I, as the 47th President of the United States of America, am killing them." As the conflict approached the 2-week mark, the leaders of Iran, Israel and the United States all voiced defiance and have vowed to fight on. And Prime Minister Modi had a telephone conversation with Iranian President Masoud Pezeshkian on Thursday. The Iranian President told PM Modi about the current situation in Iran and shared his perspective on recent developments in the region. The Prime Minister expressed deep concern about the evolving security situation in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. The Prime Minister highlighted India's priority regarding the safety and well-being of Indian nationals in the region, including in Iran, as also the importance of unhindered transit of energy and goods. The two leaders agreed to remain in touch. An Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that joint US-Israeli campaign was crushing Iran and its Lebanese ally Hezbollah. He spoke soon after the new Iranian ruler Mojtaba Khamenei's first statement. Netanyahu called for Iranians to rise up and overthrow the Islamic Republic. He said that he was seeking to use the conflict to oust the clerical leadership in Tehran. We are crushing the nuclear infrastructure of Iran, the missile and launcher array, the repression headquarters, the regime's centers of power, and many more targets. At the same time, we are working to advance another objective, to create the conditions for the Iranian people so that they can remove the cruel
tyrannical regime that has oppressed it for nearly half a century. Earlier, Iran's new supreme leader Mojtaba vowed that the country would not forget what he called the blood of the martyrs. In a television broadcast in which Khamenei's message was read by a representative, Iran's new chief said its neighbors should close all US bases on their territory, which Iran would to continue to attack. State television offered no explanation for why Khamenei's first remarks were read out by a presenter rather than delivered in a video address. We will demand reparations from the enemy, and if they refuse, we will confiscate from their assets to the extent we deem necessary. And if that is not possible, we will destroy an equivalent portion of their property. We share land or maritime borders with 15 neighboring countries, and we have always sought warm and constructive relations with all of them. These countries must clarify their stance towards the aggressors against our homeland and the killers of our people. All right, DD India's Jessica Taneja joins us for more on the West Asia conflict. Hi, Jessica. Prime Minister Modi has spoken with the Iranian President amid rising tensions in the region, while External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has also held several conversations with his Iranian counterpart in recent days. You tell us how significant or crucial are these diplomatic engagements in the context of the evolving situation in West Asia? Well, we're all aware of what's taking place in West Asia, given the kind of security concerns that have arisen over the past 2 weeks, and with the Indian Prime Minister Narendra Modi speaking to the Iranian President Masoud Pezeshkian last night. That conversation it's significant in more ways than one, because of India's energy needs and also India's relationship with Iran, which has been quite strengthened over the years, and India's, of course, outreach to all the GCC. So perhaps one of the more important part here of the conversation is that yesterday it was highlighted that even the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar had spoken to his counterpart Abbas Araghchi, the Iranian Foreign Minister, about 3 times. And if I can see it again, there's another conversation that the External Affairs Minister has talked about on social media platform X, where he said that he had another conversation with the Iranian FM Abbas Araghchi yesterday night, discussed bilateral matters and also BRICS-related issues. That's what Dr. S. Jaishankar has put out in terms of details of conversations with his counterpart. Now, of course, this is an important time. India has pushed for dialogue and diplomacy, but this is a tense moment for, in fact, not just world trade, but also world peace in terms of how these military operations are impacting both sides, not just the Iranians on the ground, but also the American soldiers whose lives continue to be at stake. Jessica, also talking about energy supplies, given India's dependence on Gulf energy supplies, how are these market movements and geopolitical tensions, expected to influence India's import cost and also broader energy security outlook? Well, it will certainly add costs for India when it comes to importing energy. Remember, India imports nearly 80% of its energy needs, and from the Strait of Hormuz, which is now at the heart of massive issues that we're witnessing right now in terms of trade flow, not just for oil tankers, but also other essential containers carrying huge shipments. That has also come under massive security concern. But for India particularly, and I'm talking about the energy needs worldwide, now you saw the statement from the International Energy Agency, which said that it will release more than 400 million barrels of oil, something it hasn't done in the last few years, as we've seen, Abhishek, if you look at what similar situation that the world was faced when Russia and the Ukrainian conflict had taken place. And back then they had released nearly half the amount of energy reserves, or oil reserves as they say, but this time around it's nearly doubled to 400 million barrels. Well, that is one contingency plan, but on the other hand, when it comes to the energy needs, looking at India needs at least 5.6 million barrels of oil every single day, and those are the kind of energy supplies that we depend on at this point. And with the Strait of Hormuz being closed, nearly
10 million barrels of crude cannot, that entire supply demand cannot be met, because although it is only supplying 20% of the energy needs, but that crucial 10 million barrels of oil that is flowing through that narrow 22-mile strip is certainly going to impact the rest of the world, because it's not just about crude, but it is also about liquefied petroleum gas, which India nearly imports almost 90% of it, and that certainly would give a cause of concern to the authorities here. But the Indian authorities have assured that they have contingency plans. They're making sure that all the energy supplies, or at least, ensuring that there is no crisis at the very last moment, that perhaps could be avoided. But with this conflict ongoing and things becoming increasingly uncertain by the minute, it is of course difficult in the planning and the works as well as to how the energy needs would be met, because that powers the economy, not just in India, but everywhere around the world. You're looking at potential disruptions that could give rise to inflation and perhaps more poverty in a world which has just barely recovered from COVID crisis. Absolutely. Countries across the world source their petroleum products from the Gulf nations. All right, Jessica, we'll leave it at that. Thank you for inputs. We are also joined in by our correspondent from Dubai, Vinod Kumar. Vinod, what is the latest you can tell us? Debris from an intercepted attack struck a building in central Dubai, and explosions were heard across parts of the city. What is the latest coming in from the authorities there? Yes, Abhishek. The Dubai Media Office and other authorities have said that debris from a successful aerial interception hit the facade of a building in central Dubai. Why central Dubai? You must be knowing that a couple of days back, the Bank of Sepa in Iran has been attacked by the US and Israeli forces, and in retaliation to those attacks, Iran has vowed that major financial centers across GCC will be attacked. And today's interception happened right at the Sheikh Zayed Road in the downtown Dubai, near the Dubai International Financial Center. Definitely, Iran is now targeting Dubai because it is the financial heart point of the entire GCC. And residents across UAE reported loud explosions. And most of these strikes, which happen due to ballistic missiles, are happening in Abu Dhabi and not in Dubai. In Dubai, you are getting a continuous barrage. Streams of drones are coming, but most of these explosions that we are seeing in high-level explosions are in Abu Dhabi, because Abu Dhabi hosts the Al Dhafra Air Base, the 38th Expeditionary Division of the US Air Force stationed at Al Dhafra. There we are getting continuous ballistic strikes. Yesterday itself, the UAE Defense Forces confirmed that there were 10 ballistic strikes, and all of these were intercepted. UAE is showing remarkable resilience and robustness when it comes to air defenses. And the day-to-day life in this country is completely normal. Emergency services are responding very quickly, and situation anywhere in Dubai or in Abu Dhabi is brought under control within minutes. And across Gulf, not only UAE, Saudi, Bahrain, Kuwait, everywhere interceptions are a continuous thing. Whenever these interceptions happen, falling debris has occasionally caused localized damage. This debris falling is actually beyond the control of the Gulf air defenses. We are getting alerts constantly on our phones that whenever these interceptions are happening, go take shelter, go to your room, and don't stand in balconies or near to the windows. That's how things are happening here. Right. Vinod, you mentioned Dubai is home to a large expatriate population, including many Indians. Advisories you are saying constantly, you've been getting alerts. But with reports of drone interceptions in Saudi Arabia and explosions in Dubai, how are countries across the Gulf responding to these developments? Yes, Dubai, the GCC region hosts a cumulative of 8 to 10 million Indian diaspora, and Dubai, UAE itself is host around 4.5 million strong expatriate population. Not only Indian population, the country of UAE hosts around citizens from 192 nationalities, and continuously precautionary advice for all residents are being given. Officials are always urging people to remain calm and follow emergency alerts, and keep checking their mobile phones for the alerts, and keep turning on their government alert protocols in their mobile using cell broadcast system. And authorities are also asking the people who are driving the cars or other motor vehicles not to stop immediately, continue with your life, so that road accidents will not happen due to this debris falling. And most importantly, they are asking not to spread panic,
not to do photography or videography of sensitive Yeah. areas, missile falling or debris falling or drone attacks, and not to post on social media or any other platform so that panic will not spread. So, in short, the entire Ministry of Interior, the UAE Department of Defense, all of them are working in conjunction so that panic is not spread, and the diaspora, Indian diaspora, and the entire residents of UAE is well taken care. All right, Vinod, thank you for the time being, but yes, we'll keep taking updates from you. Brent crude inched further above $100 a barrel, and stocks fell in early Asian trade on Friday after Iran vowed to attack oil resources in the West Asia and keep choking the Strait of Hormuz. Having risen above $100 on Thursday, Brent was up 0.20% at $100.66 this morning, while West Texas Intermediate was flat at $95.75. Meanwhile, all three major U.S. stock indexes slid more than 1.5% in a broad sell-off. The S&P 500 notched its biggest three-day percentage drop in a month. The S&P 500 lost 1.52%. The Dow Jones Industrial Average fell or 1.56%, while the Nasdaq Composite lost 1.78%. And countries across the world source their petroleum products from the Gulf nations. Many countries, including South Korea, Thailand, Hungary, announced a slew of measures to cut fuel consumption as West Asia war has disrupted supplies. Let's take a look at latest economic events. The U.S. Treasury Department said on Thursday that it would temporarily allow the sale of Russian oil, that is at sea. Australia will be releasing petrol and diesel from its domestic reserves to help counter disruptions to the fuel supply chain and ease shortages in many regional parts of the country. China has tightened export curbs on refined oil products. Chinese oil refiners have begun cancelling agreed refined fuel export cargoes, including gasoline and diesel. South Korea said that a fuel price cap would be imposed to mitigate pressure on the country's energy supply. It is the first such measure introduced since 1997. And talking about Spain, Spain will be soon presenting a plan to contain the war's impact on electricity and fuel prices. Specific aid would be targeted at agriculture and road transport hit hard by diesel prices. Vietnam is planning to tap an emergency fund to cool surging fuel prices. Disrupted supplies sparked long queues at petrol stations across the country. And Thai Prime Minister has announced a temporary price cap on diesel. Thailand has about 95 days of energy reserves left. And to control the situation, the officials have ordered work from home for the duration. Meanwhile, Hungary has introduced a cap on fuel prices to address the increasing costs at the pumps. To ensure adequate supply, Hungary would also release some of its oil reserves. Meanwhile, in a relief for some, Iran has allowed ships from some countries to cross the Strait of Hormuz. Iran's Deputy Foreign Minister Mojtaba said denying the Islamic Republic is laying mines there as the waterway remains effectively closed during the war with the US and Israel. Takhravanchi, during an interview, said, as far as Iran is concerned, we feel that those countries that joined the aggression should not benefit from safe passage through the Strait of Hormuz. As the Iran war keeps oil prices around $100 a barrel, the German government is trying to project stability despite mounting economic pressure. And for more, we are joined by DW correspondent Chiponda Chimbelu in Berlin. Hi Chimponda, good to have you. How is the German government responding to this surge in oil prices? Well, the German government has said that the country's energy supply is secure
And on Wednesday, we heard from the Federal Economy Minister, Katharina Reiche, and she said that Germans need not be concerned about oil and gas supplies, also because Germany's dependence on oil supplies from the Gulf region is low. But that is probably not what Germans are paying attention to. They are looking at what's happening at the gas stations, where gasoline and diesel prices are over €2 per litre, which is 30 cents higher than where they were before the beginning of the Iran war. Now, while Germany is planning to release 19.51 million barrels of its oil reserves, gasoline and diesel prices remain at the highest levels, not too far from where they were before, or rather after, Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. So that is why the German government is also planning other interventions. Also, Chiponda, what other measures are being considered to help stabilize the market? The government is planning to restrict price hikes at gas stations. So here in Germany, prices at gas stations can be raised or lowered several times a day. And the government wants to restrict price hikes to once a day. So that is a move that could help reduce the burden on commuters, who often do wonder when the best time to fill up is, because they just don't know whether prices will be going up or down. But Berlin won't be limiting how often gas station operators can lower prices. And on top of that, the government is also considering tightening antitrust law. It does want to give the Federal Cartel Office, which monitors price fixing and hikes, more powers to intervene. But of course, whether any of this will be enough to put any downward pressure on gasoline and diesel prices does remain to be seen. The fact is that even the International Energy Agency's coordinated record release of oil reserves by its members this week hasn't managed to calm markets or reduce oil prices. All right, Chimpona, we'll leave it at that. Thank you for getting us those updates. Moving on, the Islamic resistance in Iraq, an umbrella group of Iran-backed armed factions, has claimed responsibility for downing a U.S. military refueling aircraft in western Iraq on Thursday. The group said in a statement that it had shot down the KC-135 aircraft in defense of country's sovereignty and airspace. Earlier, a U.S. military refueling aircraft crashed in western Iraq amid the country's joint military offensive with Israel against Iran. In a statement, U.S. Central Command said it was carrying out rescue efforts after the U.S. KC-135 refueling aircraft went down. The statement said that the crash involved two planes possibly colliding or engaging in close maneuvers. The second aircraft landed safely. Before the aircraft crashed, the U.S. military had reported that 7 U.S. troops had died in the ongoing military campaign. Another 140 have been wounded overall, with Pentagon spokesperson Sean Parnell counting 8 that faced severe injuries. Thursday's crash is the latest to befall the U.S. military since it began operations against Iran on February 28. An Iranian Foreign Minister Said Abbas Araghchi on Friday claimed that American negotiators dismissed Iran's proposal aimed at ensuring no nuclear weapons because they failed to grasp its technical details. Araghchi, in a social media post, said that Iran had proposed mechanisms to ensure there would be no nuclear weapons, but the idea was rejected because U.S. counterparts didn't grasp the technical details. Araghchi also pushed back against arguments that the United States could benefit economically from rising energy prices caused by the conflict. According to him, the surge in oil prices and tariffs would not benefit ordinary Americans. And in other news, 2 violent incidents in the United States are raising fears of retaliatory attacks amid rising tensions in West Asia. Authorities say a shooting at Virginia University and a truck attack at a Michigan synagogue both appear to be targeted acts linked to extremist motives. One person was killed and several others injured before both suspects were shot dead. Here's more. A synagogue in suburban Detroit turned into a scene of chaos after a man drove a truck into the building, also housing a daycare center. The suspect smashed through the entrance of Temple Israel and drove down a hallway before being confronted by armed security. The FBI is investigating the incident as a targeted attack on the Jewish community. Authorities identified the suspect as Ayman Ghazali, a Lebanon-born U.S. citizen. All 140 children inside the preschool were safely evacuated. But the crash sparked fire that filled the building with smoke.
30 law enforcement officers were hospitalized for smoke inhalation. Oakland County Sheriff Michael Bouchard praised the synagogue security team for preventing a larger tragedy. The security staff did an amazing job. And you'll get some of the details on that, but they stopped the threat. No kids, no staff were hurt. Now, there were some injuries and things that had to be taken care of. One of the head of security was taken to the hospital. He got knocked down by the car when it breached the building. And we've had 30 law enforcement officers taken to the hospital for smoke inhalation. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said anti-Semitism knows no limits. U.S. President Donald Trump called the Michigan synagogue attack terrible and expressed support for the Jewish community. The incident comes amid a surge in anti-Semitic attacks across the United States. Earlier the same day, another violent incident unfolded at Old Dominion University in Norfolk, Virginia. A gunman opened fire in a classroom, killing one person and injuring two others, both U.S. Army personnel. The suspect was subdued and killed by Reserve Officer Training Corps students on campus. Investigators identified him as Mohammed Jalloh, who had previously served a prison time after pleading guilty to providing material support to the Islamic State group. The latest incidents follows a series of extremist-linked attacks and plots on U.S. soil in recent years. Federal authorities arrested suspects accused of attempting to detonate homemade explosives during an anti-Islam protest outside New York's Gracie Mansion. The FBI disrupted several plots targeting Jewish institutions and public gatherings across multiple states. With investigators examining possible extremist motives in both cases, authorities say security has been increased at religious institutions across the country. Officials warn the global conflict could continue to fuel tensions at home. Bureau Report, DD India. Shifting focus, Pakistan has once again carried out bombardments in Kabul, Kandahar, Paktika and several other areas. In certain locations, civilian homes were deliberately targeted. In response to the Pakistan's night raids in Beka, Afghan Air Force targeted strategic military centers and facilities of Pakistani troops in Kohat area of Khyber Pakhtunkhwa this morning. Islamabad last month launched a wave of airstrikes on its neighbor, an operation it says is targeting terrorists following growing attacks in Pakistan. Meanwhile, private Air Airlines fuel storage near Kandahar Airport has also been targeted. This company provides fuel materials for domestic airlines as well as for United Nations aircraft. As per the Kabul police, 4 people were killed in strike initiated by Pakistan. Still to come on this edition of DD India News Hour. We'll get you Parliament updates. Speaker Om Birla slams opposition over protest. And air travel between India and parts of the West Asia gradually resumes, with airlines announcing select operations for Friday. Can the US launch a bombing campaign against Iran? The Philippines vessel suffered structural damage. The saga of child sexual abuse is the United States China's debt trap strategy. Truth is stranger than fiction. But sometimes hard to uncover. Trust us to tell the truth, unadulterated and pure, of every story that matters to you. You read between the lines, cut the clutter, and connect the dots to get you the full picture. Watch Connecting the Dots at these times with me, only on DD India. Welcome back. You're watching DD India News Hour. I'm Abhishek Mahajan. Some more stories. The budget session of Parliament continues on Friday. Proceedings in both the houses of the Parliament were adjourned following protests by opposition members.
In lower house, opposition members raised slogans as the house was adjourned multiple times. Speaker Om Birla urged members not to disrupt the question hour, stressing that it is crucial time for MPs to raise issues related to their constituencies and matters of national importance. He reminded the House that maintaining the dignity and sanctity of Parliament is the responsibility of every member, both inside and outside the chamber. Lok Sabha resumed at 2 p.m. with the reply of Finance Minister Nirmala Sitharaman on the supplementary demand for grants 2025-26. Meanwhile, question hour in upper house began with the members discussing the impact of cheap imports on the handloom industry. Minister of Textiles Giriraj Singh said that 70% of the people involved in the handloom sector are women. He highlighted the Samar scheme for upskilling the youth in the textile sector. Members also discussed railway projects in Kerala and Odisha. Minister of Railways Ashwini Vaishnav, quoting E. Sridharan's report, said that the Kerala state government has no expertise in railways. And air travel between India and parts of the West Asia is gradually resuming, with airlines announcing select operations for Friday. Air India and Air India Express will together operate a total of 78 scheduled and non-scheduled flights to and from West Asia region. The two carriers continue to operate their respective scheduled services to and from Jeddah and Muscat, operating a total of 6 flights to and from Jeddah, and Air India Express operating 12 scheduled flights to and from Muscat. Additionally, Air India will operate 1 round trip each from Delhi and Mumbai to Jeddah, while Air India Express will operate 1 flight from Hyderabad to Jeddah and back. Both airlines will also operate 1 non-scheduled round flight each to Riyadh in Saudi Arabia from Mumbai and Kozhikode respectively. Air India Express will also operate its scheduled services to Muscat, including 1 round trip each from Delhi, Kannur, Kochi, Kozhikode, Mumbai and Thiruvananthapuram. And in a statement issued by Ministry of Civil Aviation, India is closely monitoring the evolving situation in West Asia region. The ministry has said that India is also monitoring the impact of West Asia on air travel between India and countries in the region. Additionally, airlines are undertaking necessary operational adjustments to ensure passenger safety and the orderly conduct of flight operations. Flight operations by Indian carriers to and from Riyadh have resumed from 12 March. A total of 1,50,457 air passengers travelled from the Gulf countries to India between 28 February to 11th March. The ministry has also advised passengers to remain in contact with the respective airlines for the latest updates. Now, speaking at the inaugural ceremony of a new city Montessori school building at Golf City in Lucknow, India's Defence Minister Rajnath Singh said that a city truly shapes the future of society when its identity is defined not just by the infrastructure but by its educational and cultural institutions. Later in the day, the minister will also mark his presence for the inauguration of a new green corridor. जब किसी शहर की पहचान उसकी सड़कों और इमारतों से आगे बढ़कर उसके शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों से बनने लगती है, तब वह शहर वास्तव में समाज के भविष्य को एक शेप दे रहा होता है। और आज का यह शहर, मैं मानता हूं, आज का यह अवसर, मैं मानता हूं कि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं ये कहना चाहूंगा, यह किसी नई इमारत का कोई उद्घाटन भर नहीं है, यह एक विचार का, एक थॉट का एक्सपेंशन है, एक विचार का यह विस्तार है। Now, Research and Development Establishment Pune-based lab of India's Defence Research Arm DRDO, along with Defence Institute of Advanced Technology, which is DIAT, have developed indigenous tactile sensor arrays for advanced robotic applications. The technology paves the way for developing artificial skin for future robots. The sensors can handle delicate, lightweight and heavy objects and are capable of detecting slip. DIAT demonstrated the efficacy of the sensor array before it was handed over to R&DE. And the ongoing 11th edition of the India-Seychelles Joint Military Exercise
Lametse 2026 being conducted at the Seychelles Defence Academy from 10th to 22nd March 2026. A series of professional interactions, tactical drills and cultural engagements aimed at enhancing interoperability and strengthening defence cooperation were held between the Indian Armed Forces and the Seychelles Defence Forces. The exercise, it brings together personnel from the Indian Army, Navy and Air Force alongside the SDF to jointly train for sub-conventional operations in semi-urban environments under the framework of UN peacekeeping operations. And Prime Minister Narendra Modi on Friday congratulated the President of Chile, Jose Antonio Castrist. In a post on social media site X, PM Modi wrote, and I quote him here, "Warm congratulations to Jose Antonio on assuming the office of the President of Chile. I look forward to working closely with him to further strengthen the warm and friendly relations between India and Chile and to deepen our cooperation across trade, technology and energy. Best wishes for a successful tenure." Moving on, the Chhattisgarh government is taking a major step towards technology-driven development with the launch of the Chief Minister AI Mission. Announced in 2026-27 state budget while boosting innovation, investment and employment across key sectors in the state. Moving beyond traditional development, Chhattisgarh is advancing in the field of technology. In the 2026-27 state budget, the government has... All right, we'll go across live now to Assam. Prime Minister Modi will perform Bhumi Pujan and lay foundation stone and flag off projects worth over rupees 4,000 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। देवी और सज्जनों, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे अनुष्ठान के साथ जोड़ चुके हैं। तहे दिल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं। हाबाफारियाव नुजाफैनाय साफ्रोमबोनिसिम फिन खेबसेबाव बरायबाय। दानिया जोङो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि सारखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, असम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम की माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जयंत मल्ल बरुआ, श्री उर्खावगरा ब्रह्म और श्री शरण बरो जी, माननीय सांसद सम्मानीय अतिथिगण और इस विशाल समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का अवसर है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं अपने तथा बदौलन के समस्त लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही अभी सभी सम्मानित अतिथिगण सहित समारोह में उपस्थित आप सबका भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री जी आज बांसबारी वागनपुर शॉप की स्थापना सड़कों, पुलों और जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भूमि पूजन से शुरुआत हो रही है, यह हमारी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़कों और बुनियादी पे हमारे किसानों, व्यापारियों, छात्रों और युवाओं के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे। आरो अपनार आज सचाके आमार प्रधानमंत्री डांगरियाय आमार बीटीसी अंचलत गसाईगांव चारिआली कक्राझार और कारिगांव जितु रास्ता यार माजत टका तिनिआली देवरगांव और तितागुड़ी जितु नतुनकै फ्लाईओभार और यार लगते सनकोश नदीर ऊपर जितु नतुन दलं और यार पिছত बेकी नदीर ऊपर जितु नतुन दलं यार ऊपर प्रधानमंत्री डांगरियाय आज भूमि पूजन करिब सकलोৱে गम पाइছে अलप पिछते। तो आमार बीटीसी बाकी राइजर कारणे एटु बहुत डांगर डेभलपमेंट उन्नति बोली आमी कब पारो। जेन हक प्राइम मिनिस्टर डांगरियार उपस्थितित आज आमार बीटीसी अंचलत बहुत डांगर एटा उन्नति पक्षे माने आगुवाई লৈ যাব কাৰণে যেটো পদক্ষেপ লৈছে এটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱ কৰিবলগীয়া। তো আজি আমি সঁচাকৈ বহুত মনত ভাল লাগিছে যে আমি বহুত বছৰৰ পৰা যেটো বিচাৰি আছিলো যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভূটান গেলেমপুৰ যোৱা যেটো ৰেলৱে লাইন এটো কেইদিনমান পিছতে माने हेतु भूमि पूजन एटु हबले गय आछे आरो आमी भाबो प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी डांगरियाय आमार जितु इंडो भूटान जितु नेशनल हाईवे हेतु जदि आरो करि दिए तेतिया हले आमार जितु भारत और भूटानर जितु वाणिज्य बा जिकुनु टुरिज्म जिकुनु साइडत बहुत आरो आगुवाई লৈ যাব পাৰিব বা উন্নতি হ'ব বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস। এই কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ কৰিছো এই নতুনকৈ যেটো ইণ্ডো ভূটান যেটো নেশনেল হাইৱে নিশ্চয় ভৱিষ্যত আমাক কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব। যেন হওক सर, आसाम में आने वाले अप्रैल महीने में आसाम इलेक्शन होने वाला है। इसमें जो नया गवर्नमेंट होगा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगा 100% श्योर। उसको हम 100% गवर्नमेंट बना के दिखाएंगे। और सर, पूरा दुनिया में पूरा भारतवर्ष की सभी लोग आपको मालूम है, आपको सभी बहुत दिलदार आदमी है बल्कि सबकी मालूम है। तो भारत की प्रधानमंत्री होके दुनिया में सब भी मालूम है आपको आप कौन है। तो दिल से हमारा बदौलन वासियों के लिए भी खुश तो खुश करके जाएंगे। सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, दिलदार आदमी हम भी मानते हैं। तो इस
एक बार फिर मैं आपका कोकराझार में हार्दिक स्वागत करता हूं और बोडोलैंड में लोगों के प्रति आपके कृपा दृष्टि और निरंतर सहयोग के लिए हृदय से आपको नमन और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद श्री मोहिलारी डांगुरिया। असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने राज्य में विकास को नया आयाम, नई परिभाषा दी। शासन और प्रशासन को इन्होंने एक नई दशा, दिशा एवं दृष्टि दी। एतिया অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। আজিৰ এই সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় তথা অসমবাসীৰ হৃদয়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰী লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত বিটিচিৰ প্ৰধান শ্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি আজিৰ সভাত উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰলৈ আহি আপোনালোকক সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু বতৰৰ প্ৰতিকূলতাৰ বাবে তেখেত কোকৰাঝাৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে যদিও গুৱাহাটীৰ পৰাই তেখেতে আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব আৰু বিটিচিবাসীক তেখেতৰ হৃদয়ৰ কথা অৱগত কৰিব। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আৰু বিটিচিৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। পোনপ্ৰথমে মই বড়ো সমাজৰ মহান সমাজ সংস্কাৰক শ্ৰী কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু বড়ো জাতিৰ অগ্ৰজ নেতা বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুবোৰ নতুন আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৩,২৫৮ কোটি টকা ব্যয়েৰে প্ৰায় ৭০টা পথৰ উন্নয়নৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মই অত্যন্ত আনন্দিত যে এই অসম মালাৰ পথসমূহৰ ভিতৰত কেইবাটাও পথ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ অনুৰোধত অসম মালাৰ কেইবাটাও ৰাস্তা আমি বড়োলেণ্ডত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজি তাৰে আমি শুভাৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বড়োলেণ্ডত আজিৰ দিনটোতে ১১০০ কোটি টকা ব্যয় কৰি ৪খন উৰণ সেতু আৰু 2খন নতুন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কামো হাতত লোৱা হ'ব। এই উৰণ সেতু 4খনৰ এখন ডিকে ৰোডৰ গোসাইগাঁও চাৰিআলিত নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আন 3খন জুৱাওলাও দৈমালু পথৰ বালিজান তিনিআলি, দেৱৰগাঁও জংচন আৰু তিতাগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আজি বিটিচিবাসীৰ বাবে আৰু এক আনন্দৰ দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিচিৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু
সেই চুক্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও নতুন কাম হাতত লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। আজি বিটিচি প্ৰশাসনে দিয়া ভূমিৰ ওপৰত বাঁশবাৰীত ৰেলৱে মন্ত্ৰালয়ে ৱাগন পিৰিয়ডিক অভাৰহলিং ৱৰ্কশ্বপ প্ৰায় 256 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি কোকৰাঝাৰ ৰেল ষ্টেচনক সংযোজিত কৰি কামাখ্যা আৰু চৰলাপল্লীৰ মাজত অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব। গুৱাহাটী নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰম্ভ হ'ব আৰু নাৰেংগী আগৰতলা এক্সপ্ৰেছৰ কামো আজিৰ পৰা নাৰেংগী আৰু আগৰতলা এক্সপ্ৰেছও চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ সভাতেই তেখেতৰ কৰকমলেৰে এই আটাইবোৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই উল্লেখ কৰাৰ দৰে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি ভূটান আৰু কোকৰাঝাৰক সংযোজিত কৰি নতুন ৰেলৱে লাইন গেলেফু আৰু কোকৰাঝাৰ ৰেলৱে লাইনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি কাম হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ডৰ বিকাশ আৰু বড়োলেণ্ডৰ প্ৰগতিয়ে এটা সমগ্ৰ বড়োলেণ্ডক শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এক নতুন অভিকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত তেখেতে নিজে কেইবাবাৰো আহি বড়োলেণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনিসমূহৰ কাম হাতত লৈছে। মই আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমি যুটীয়াভাৱে প্ৰচেষ্টা কৰিম যাতে বড়োলেণ্ডলৈ আৰু উন্নতি আহিব পাৰে আৰু আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। শেষত এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিল আৰু বড়ো সমাজৰ সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বাগৰুম্বা নৃত্য তেখেতে নিজে গুৱাহাটীত বহি চাইছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাগৰুম্বা নৃত্যক সমগ্ৰ বিশ্বতে বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেখেতে তেখেতৰ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে কেইবাটাও বাগৰুম্বাৰ দৃশ্য বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত লৈ যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। আপোনালোকে জানি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বাগৰুম্বা নৃত্য 1.5 কোটি মানুহতকৈও বেছি সমগ্ৰ বিশ্বতে মানুহে এই বাগৰুম্বা নৃত্যক দৰ্শন কৰিছিলে বা চাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাগৰুম্বা নৃত্যক ইমান সন্মান জনোৱা আমাৰ সমসাময়িক ইতিহাসত আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। বড়ো জাতিৰ প্ৰতি তেখেতৰ থকা অসীম শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নতুন দিল্লীত বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু নতুন দিল্লীত তেখেতে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত ৰাস্তা পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰিছে। মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বড়োলেণ্ডবাসী আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাৰ বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই দুইজনে একেলগে কাম কৰি বড়োলেণ্ডৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি যাম। সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।
পুনর্ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাইছো। जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। अब असम माला 3.0 के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है, विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं, विकास आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। और इसी विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सुनिश्चित किया है कि असम का कोई भी इलाका विकास से वंचित न रहे। इसी राष्ट्रीय विकास दृष्टि का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है असम माला। असम सरकार द्वारा शुरू किया गया ये फ्लैगशिप कार्यक्रम राज्य के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को आधुनिक, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क कॉरिडोर में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। असम माला के पहले चरण में 33 सड़कों का विकास किया गया, जिनकी कुल लंबाई 1056 किलोमीटर से अधिक है। इसके साथ ही 120 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया गया और इस चरण में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए शुरू हुआ असम माला 2.0। इस चरण में लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही 46 नए पुलों का निर्माण राज्य के सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बना रहा है। पहले आगे रोड नहीं होने से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन बड़ा रोड होने से मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ गया। पहले तो यहाँ से कोकराझार पहुँचने में आपको 1 घंटा लग जाता रहा, अभी तो 25 मिनट में हम कोकराझार पहुँच जाते हैं। अब इस विकास यात्रा का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, असम माला 3.0। इस चरण में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लगभग 883 किलोमीटर नई सड़कों और 36 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। और इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी असम माला 3.0 का शिलान्यास करेंगे। यही है असम की डबल इंजन सरकार का प्रभाव। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा असम माला 3.0 का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। अब बीटीसी का सड़क परियोजना को दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। धीरे बहती नदियां, हरी भरी धरती और मेहनत, संस्कृति और परंपराओं से भरा जीवन। पश्चिम असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, प्रकृति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि असम का कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रह जाए। और आज इसी संकल्प के साथ बीटीसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है 1100 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की ऐतिहासिक भेंट। ये भेंट बीटीसी क्षेत्र को देगी कनेक्टिविटी, प्रगति और समृद्धि की नई शक्ति। इन परियोजनाओं में शामिल है संकघोष नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो कोकराझार जिले को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गोसाईगांव चारियाली पर आधुनिक फ्लाईओवर, जो यातायात को सुगम बनाएगा और व्यापार को गति देगा। बलाजन तिनियाली पर फ्लाईओवर निर्माण, जो क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा। देवरगांव जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना, जो रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा। तीतागुरी क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण, जो विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। और बक्सर जिले में बेकी नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ेगा।
इस परियोजना से बीटीसी क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीदें पैदा होंगी। बेहतर सड़कों के निर्माण से गांव और शहर आपस में आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये असम की डबल इंजन सरकार है, जो कहती नहीं करके दिखाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और असम के विकास को देंगे नई दिशा। अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे बीटीसी सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। आज यहां रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं लेकर आए हैं। इस अवसर को दर्शाती एक लघु फिल्म अभी आपके लिए प्रस्तुत है। पूर्वोत्तर उदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा का अहम स्तंभ। देश की प्रगति में ये अष्टलक्ष्मी आज अग्रणी योगदान दे रही है और इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। आज पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट बढ़कर वर्ष 2009 से 2014 के बीच औसत वार्षिक बजट का 5 गुना हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम की इस पावन धरा से इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं अमृत भारत सहित 3 नई रेल सेवाओं की सौगात। कामाख्या चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की इस नई रेल सेवा से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के साथ कनेक्टिविटी होगी मजबूत। एर्गोनॉमिक सीट्स, मोबाइल होल्डर्स, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक सीटें, फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स जैसी सुविधाओं के साथ किए अमृत भारत ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस नई रेल सेवा से असम के साथ उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नारंगी अगरतला नई एक्सप्रेस रेल सेवा से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला व असम की राजधानी गुवाहाटी के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और यात्रियों को भी लाभ होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी बांसबाड़ी में 256 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पीओएच वर्कशॉप का भी करेंगे शिलान्यास। इस वर्कशॉप में रोलिंग स्टॉक रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेल परिचालन मजबूत होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारतीय रेल की इस पहल से नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी की सूरत बदलेगी, बल्कि नौकरी पेशा, छात्रों और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। पूर्वोत्तर उदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों से कोकराझार के बांसबाड़ी में पीओएच वर्कशॉप की स्थापना का शिलान्यास आभासी रूप से करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 रेल सेवाओं का शुभारंभ करें।
धन्यवाद मान्यवर। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे इस भव्य सभा को संबोधित करने का कृपा करें। खुलुमबाई कोकराझार। साथियों, मौसम खराब होने की वजह से मैं कोकराझार नहीं आ पा रहा हूं। मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। यहां गुवाहाटी से ही आपसे संवाद संभव हुआ है। मैं दिल्ली से निकला था आपके पास आने के लिए, लेकिन मुझे गुवाहाटी में ही उतरना पड़ा और अब मैं गुवाहाटी से आपके दर्शन भी कर रहा हूं और आपसे बात भी कर रहा हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े असम के मुख्यमंत्री भाई हेमंत बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी सर्बानंद, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हाग्रामा मोहिलारी जी, हमारे साथ उपस्थित असम के गवर्नर श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बीटीसी के सभी प्रतिनिधि, समाज के सभी वरिष्ठ जन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी और इस धरती के महान व्यक्तित्वों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने आए हैं। आप वहां इतनी विशाल संख्या में पहुंचे हुए हैं। आपका ये प्यार मुझ पर कर्ज की तरह है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि इस कर्ज को मैं आपकी सेवा करके चुकाऊं, इस क्षेत्र का विकास करके चुकाऊं। साथियों, अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गुवाहाटी में था। वहां मुझे बागुरुम्बा दहौ के भव्य उत्सव में समृद्ध बोडो संस्कृति का हिस्सा बनने का अवसर मिला। मुझे देखकर बहुत गर्व होता है कि बोडो समाज ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को इतना संभाल कर सहेज कर रखा है। बाथौ की आध्यात्मिक परंपरा हो या बैसागु का उत्सव, ये सब भारत की सांस्कृतिक ताकत को और मजबूत बनाते हैं। साथियों, भाजपा एनडीए की डबल इंजन सरकार भी असम की विरासत के संरक्षण और असम के तेज विकास दोनों के लिए
निरंतर काम कर रही है। आज यहां इस कार्यक्रम में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बोडोलैंड की सड़कों के लिए खर्च होने जा रही है। असम माला इस अभियान के तीसरे चरण से असम की रोड कनेक्टिविटी और अधिक सशक्त होगी। साथियों, थोड़ी देर पहले मुझे कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का भी अवसर मिला है। इन सभी प्रोजेक्ट से आपको सुविधाएं तो मिलेंगी ही, ट्रेड और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की उपज आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था। हमने वो मुश्किल समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बम बंदूक की ही गूंज सुनाई देती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज ये पहाड़ियां खाम की थाप और सिफुंग की मधुर धुनों से गूंज रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास की राह पर चल पड़ा है। आज असम शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है। साथियों, आज यहां बीटीआर क्षेत्र की 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। यहां बनने वाली रेलवे की वर्कशॉप इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स का एक बड़ा सेंटर बनाने वाली है। यहां भूटान को जोड़ने वाली रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। अब वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें काकराझार में रुकती हैं। यह बोडोलैंड की बेहतर कनेक्टिविटी का प्रमाण है। ऐसे प्रोजेक्ट से कोकराझार व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। साथियों, मैं हागरामा मोहिलारी जी की टीम को, हेमंता जी की पूरी टीम को विकास के इन कामों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दशकों तक बोडोलैंड का ये क्षेत्र कांग्रेस के विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड की अनेक पीढ़ियों को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकारों ने
सिर्फ दिखावे के लिए कागजी समझौते किए। साथियों, जब आपने देश से और असम से दोनों जगहों से कांग्रेस को खदेड़ा और बीजेपी एनडीए को अवसर दिया, तो हमने ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। कांग्रेस जहां अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए अलग अलग समुदायों में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। साथियों, कांग्रेस की एक और सच्चाई है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। और ये आज की बात नहीं है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उसके तहत 6th शेड्यूल में बीटीसी का गठन हुआ। इससे बोडोलैंड के विकास को बल मिला। यहां बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आए। साथियों, 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे, वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं, जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोडो समाज की आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। इसके लिए अलग जनगणना कोड दिया गया है और आस्था के स्थलों के विकास के लिए भी
विशेष सहायता दी जा रही है। साथियों, कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। धुबरी और गोलपाड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति बहुत भयानक थी। इससे बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था। मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है। यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी का भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर के साथ देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। असम से निकला संदेश पूरे देश की आवाज बन जाएगा। साथियों, असम के विकास की गति को हमें निरंतर तेज करते रहना है और मैं जानता हूं कि असम की जनता के आशीर्वाद से विकसित असम का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को फिर से विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद मान्यवर। All right, so this was Prime Minister Narendra Modi attending a major public program in Kokrajhar via video conference from Guwahati, in fact, where a number of key connectivity and infrastructure projects were launched, also performed Bhumi Pujan. So these initiatives are aimed at strengthening road, rail and transport networks across Assam and the wider northeastern region. While addressing, he said the BJP-NDA's double-engine government is working tirelessly to accelerate Assam's development. Foundation stones have been laid for projects worth Rs 4,500 crore. Road connectivity will be strengthened, he said. The project is expected to significantly improve interstate connectivity while also strengthening the linkages between national highways and rural road networks, making transportation smoother for people and goods across Assam. Further, he said, we have seen difficult times in Assam, but today this picture is completely changing. Bodoland has embarked on the path of peace and development. Assam is writing a new chapter of peace and development, he said. The Prime Minister also flagged off 3 new train services aimed at further improving connectivity in Assam and the northeast particularly. He said these trains are significant. This is a proof of the better connectivity of Bodoland.
also lashed out at the Congress, saying that they didn't do anything for the people here in this region. PM Modi also mentioned about the upcoming projects and the projects already running there in that region in Assam. He said, my duty is to repay my debt with development in the region, and the pace of development of Assam has to be continuously accelerated. So that was primarily the gist of what he said, and we'll have a detailed story in our subsequent bulletins. That's all we have in this edition of DD India News Hour, but do let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates on DD India. Thanks for watching. Namaskar.